अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन व नाज़रीन, रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम डायबिटीज़ के हवाले से जो है वो फ़िज़िकल जो हमारी बॉडी है उस पर क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिस्मानी पेचीदगियाँ क्या होती हैं इस बीमारी से, इस हवाले से हम बात करेंगे। और बड़े ही स्पेशलिस्ट जो हैं शुगर से रेलेवेंट डॉक्टर्स का पैनल जो है वो हमारे साथ मौजूद होगा, और आपके जो भी इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हों वो भी आप हमारे तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। उसको हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाबात जो है आपको दिए जाएं। अभी हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन के साथ जो मोज़ेज़ डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट इस शोबे से मुतल्लिका मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ डॉक्टर सोबिया अरशद साहिबा मौजूद हैं, जो कि डायबिटीज़ के हवाले से जो है स्पेशलिटी रखती हैं। उसके साथ हमारे साथ डॉक्टर राहत अली साहब मौजूद हैं, वो भी इसी शोबे से जो है स्पेशलिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर हबीब हैदर साहब मौजूद हैं, जो कि जनरल फिजिशियन और इमरजेंसी को जो है वो डीलिंग करते हैं। तो इनसे भी हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे जो इनसे मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन होगी। तो मैं अपना प्रोग्राम जो है वो बाकायदा शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर हबीब हैदर जो है इंट्रोडक्टरी इस सेशन के हवाले से थोड़ा-सा तारुफ़ पेश करें, ताकि इसको हम फिर आगे लेकर चलें। अस्सलाम वालेकुम सबको और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जॉइन करने का आज। हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है WNTV के साथ। हम पहले भी जो है जनरल हेल्थ के ऊपर बात कर चुके हैं रमज़ान के लिहाज से और इसके बाद भी हमारा एक और प्रोग्राम जो है वो 24th को है और एक 26 को है। 24th का प्रोग्राम जो है वो रीनल डिज़ीज़ के रिलेटेड है और 26 का जो है वो हम हार्ट से रिलेटेड और हाइपरटेंशन से रिलेटेड करेंगे। मैं डॉक्टर हबीब हैदर हूँ, कंसल्टेंट हूँ एक्यूट मेडिसिन में और अपने जो ऑल पाकिस्तान फिजिशियन नॉर्दर्न यूरोप है उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और वंस अगेन मैं थैंक यू करता हूँ डॉक्टर सुबिया अरशद को और डॉक्टर राहत तौहीनी को हमें जॉइन करने के लिए। ओवर टू इरफान भाई। थैंक यू सो मच डॉक्टर हबीब हैदर, आपने जो है इस सेशन का इंट्रोडक्शन करवा दिया। ये अपने और वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क लिमिटेड का जो है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है कि ताकि आज हम जो है डायबिटीज़ अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से जो है ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके आए हैं। गुज़िश्ता जो है जनरल हेल्थ टिप्स के हवाले से आपको जो है खातिर ख्वाह इन्फॉर्मेशन दी, तो आज हम डायबिटीज़ पे जो है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और अपने जो स्पेशलिस्ट हमारे साथ डॉक्टर राहत अली और डॉक्टर सोबिया अरशद मौजूद हैं, उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। बिला तख़ीर जो है हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर हम आंसर जानेंगे अपने जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर आबद हुसैन सियालवी हूँ पाकिस्तान से। मेरा सवाल जो है डॉक्टर सोबिया अरशद से है कि अमूमन कहा जाता है कि डायबिटीज़ जो है ये बड़ी कोरिलेट है विद डिप्रेशन और टेंशन। तो अमूमन कहा जाता है कि इससे ही डायबिटीज़ जब होती है, तो क्या ये बात ठीक है? और अगर ये बात ठीक है तो कितना ज़्यादा इसका रोल है टेंशन का? और क्या ये भी ऐसा भी है कि हर बंदा जो डिप्रेसिव है वो डायबिटीज़ का मरीज़ भी ज़रूर होगा? थैंक यू। जी, डॉक्टर सोबिया अरशद साहिबा, आपने सवाल सुन लिया होगा, इस पर अगर आप कमेंट्स कर दें प्लीज़। सॉरी, मुझे सवाल का फर्स्ट पार्ट सुनाई नहीं दिया, लेकिन माय अंडरस्टैंडिंग इज दे आर आस्किंग इफ स्ट्रेस इज रिलेटेड टू कॉजिंग डायबिटीज, कि अगर कोई इंसान बहुत टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो उसको डायबिटीज होने के क्या चांसेस हैं? इज दैट अ जी, जी, क्वेश्चन? जी, डिप्रेशन और स्ट्रेस या इस हवाले से जो है क्या फ़ील होते हैं शुगर? सो स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो हमारी बॉडी में बहुत से स्ट्रेस हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो स्ट्रेस को फाइट करने के लिए बॉडी जो है वो अपनी शुगर को हाई करती है, बिकॉज बॉडी ये सेंस करेगी कि ओ आई हैव टू फाइट नाउ, बिकॉज कोई वॉर हो रही है या गोरीला मेरे सामने आ गया है, तो मुझे अब बहुत ज़्यादा फाइट करना है, तो यू नीड दैट एनर्जी। सो योर शुगर लेवल्स विल स्टे अप बिकॉज ऑफ दैट। तो कितना डायरेक्टली रिलेटेड है स्ट्रेस, आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन डेफिनेटली इट हैज़ अ रोल इन इट। और इनडायरेक्ट रोल ऐसे भी हो सकता है कि
जब इंसान टेंशन डिप्रेशन में होता है तो वो बहुत हेल्दी फूड नहीं खाएगा, मे बी कंफर्ट ईटिंग करेंगे, देयर स्लीपिंग पैटर्न्स आर डिफरेंट, सो दे पुट ऑन वेट, दे डोंट डू एक्सरसाइज, देयर नॉन सिटिंग आवर्स आर वेरी लॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। these are not the only factors that cause diabetes. Genetics हमारी जो है वो भी बहुत रोल प्ले करती है, लेकिन obviously we can't reverse our genetics, but we can reverse these things. So it's a very good question, and to help it, I think de-stress करने के whatever methods work on you, meditation, yoga, exercise, thinking positively, doing exercises, whatever works for you, you should do that to avoid diabetes. लेकिन अगर डिप्रेशन जो है वो पैथोलॉजिकल है and you think that all these simple lifestyle measures are not working, then one should always seek professional help, psychiatrist, psychologist, to do the counseling and to focus on mental health. I'm very happy that people are actually asking these questions and they want to find answers for this, क्योंकि I think mental health जो है वो especially हमारे culture में is quite ignored. So mental health is very important, and stress is a contributing factor. थैंक यू सो मच डॉक्टर सोबिया अरशद और आबद हुसैन सियालवी साहब पाकिस्तान से, उनको जवाब मिल गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर आंसर जानते हैं डॉक्टर राहत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबीला भट्ट है। क्या एक्सरसाइज के ज़रिए शुगर कंट्रोल हो सकती है या नहीं? जी डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि एक्सरसाइज के ज़रिए से शुगर जो है कंट्रोल हो सकती है या नहीं? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने नबीला। इस मुतल्लिक मैं ये कहूँगा कि डायबिटीज़ की जो ट्रीटमेंट है वो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हम इसको कहते हैं, यानी काफ़ी चीज़ें हमें इसमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। एक तो डाइट मेन फैक्टर है सबसे बड़ा, और दूसरा फैक्टर जो है वो इंडीड एक्सरसाइज है। एक्टिविटी से हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो पट्ठे हैं, उनमें जो ग्लूकोज़ है वो ब्लड से निकल के वो हमारे पट्ठों में जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ की मिकदार या चीनी की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं जो है वो ग्लूकोज़ अपटेक इनटू द मसल्स, और इसी तरह फैट के अंदर भी। तो जो एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, जो कि किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिस किस्म की भी आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका जो ग्लूकोज़ है वो आपके ब्लड से निकल के वो मसल्स के अंदर आएगा, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपको जैसे शायद आपने इधर-उधर सुना ही हो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम रेगुलर एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। वैसे तो हर बंदे को एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। रिकमेंडेशन, अमेरिकन रिकमेंडेशन है कि आप तकरीबन 30 मिनट जो है एवरी डे एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक, यानी आप हफ्ते में तकरीबन 2.5 घंटा किसी फॉर्म की एक्सरसाइज ज़रूर करें। जो अच्छी एक्सरसाइज है, जो कि पाकिस्तान में ईज़िली की जा सकती है और बल्कि हर जगह की जा सकती है, वो जॉगिंग टाइप एक्सरसाइज है। सुबह जो है ना, अर्ली मॉर्निंग, अब आप अगर कोई आस-पास बाग है तो वहाँ पर जाएँ, या कहीं अपने कहीं भी जो आप आस-पास आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप वो करें। तो एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में, लेकिन सिर्फ़ ये कहना कि एक्सरसाइज से डायबिटीज़ पूरी तरह कंट्रोल हो जाए, ये ज़्यादातर पेशेंट्स में इस तरह पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको दूसरी इंटरवेंशंस भी करनी पड़ती हैं, ख़ास तौर पे जब डायबिटीज़ लेट स्टेज में पहुँच जाए। और ख़ास तौर पे अगर टाइप जो है दूसरी टाइप की हो, जिस तरह टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, उसमें एक्सरसाइज का रोल तो है, लेकिन वो मेन ट्रीटमेंट उसकी नहीं है। आई होप मैंने ठीक। जो है आंसर जी, थैंक कन्वे यू किया। सो मच डॉक्टर साहब, आपने जो है वो क्वेश्चन का आंसर तो जो है उनको मिल गया होगा, सैटिस्फाइड भी हो जाएँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर इसका Hiya आंसर there, my जो है name's Haider and I've got a question. My niece takes insulin, vaccination, jabs, whatever they're called. How do you permanently get rid of having them? Thank you. जी डॉक्टर सूबिया, इस पे अगर आप कमेंट्स कर दें कि इंसुलिन अगर कोई लेता है तो परमानेंट उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है या नहीं? So it's a very vague question, but very good one. I can imagine people who are living with diabetes,
who have to inject 4 to 5 times a day, it is quite difficult and quite challenging, especially if it's in a younger age group. To get rid of insulin, it all depends what kind of diabetes you have. We are actually living in a very good era where we have so many new medications, different kind of injectables that you can just use once a week, but they're all for type 2 diabetes. If her niece has type 1 diabetes, that means she is dependent on insulin and she cannot miss it, then she can't get rid of the insulin, but there are other options like insulin pump, where you don't have to inject it. You have a pump that you can attach to your tummy, and you can have a patch on your arm where you can just scan and see what your sugar levels are. And you can give boluses through your pump. So insulin pump is being used for many years. That's one option, but that's only reserved for type 1 patients. You can have pancreatic transplant, you can have islet cell transplant. So there are different kind of surgical invasive options available as well. There's a system called closed loop system. I couldn't go in detail because of this program. It will take hours for me to explain this, but there are options where you don't have to inject insulin 4 or 5 times a day. It is going in your body directly through either a closed loop system or through a pump. But if her niece is type 2 diabetic and she wants to come off insulin, then there are so many options. There are plenty of new drugs and different kind of injections that can be used. थैंक यू सो मच डॉक्टर सुबिया, आपने जो है वो इसको आंसर कर दिया। हमारे साथ ज़रीना यास्मीन साहिबा जो है वो मौजूद हैं, वो हमारे प्रोग्राम को देख रही हैं, और दीगर भी जो लोग भी हमारे इस प्रोग्राम से टॉपिक से रेलिवेंट जो है क्वेश्चन हमें करना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हबीब हैदर, एक जो है वो हमारे पास कमेंट्स आया है कि आया अगर लो या हाई शुगर जो है कंट्रोल से बाहर हो जाती है, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल के अंदर जो है कैसे हमें डील करना चाहिए? इस पर अगर आप कमेंट्स कर सकें तो। अम, नहीं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको ये पता होना चाहिए कि क्या अलामतें हैं और क्या जिसको हम कहते हैं साइन और सिम्पटम्स हैं कि जब लो ब्लड ग्लूकोज़ है या हाई ब्लड ग्लूकोज़ है। क्योंकि जो है डायबिटीज़ ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज़ ज़्यादा होती है। लेकिन जो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं ख़ास तौर पे इंसुलिन, उनको जो है कभी जो है बहुत ज़्यादा ये कि जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं कि लो ब्लड ग्लूकोज़ उनकी हो जाती है, तो उसके लिए उनको पता होना चाहिए। तो उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर बंदा घर पे मौजूद है और वो डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको साथ अपने साथ एक कैंडी या कोई मीठी चीज़ रखनी चाहिए कि जब अपनी ब्लड ग्लूकोज़ चेक करे, कभी वो सफ़र पे जा रहा है कुछ, तो वो फ़ौरन उसको खा के चेक कर ले ताकि उसको जो है उसकी ब्लड ग्लूकोज़ नॉर्मल हो जाए। हम हॉस्पिटल के अंदर अगर डील कर रहे होते हैं ऐसे इमरजेंसी के तौर पे, तो उसके लिए डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं कि जो ग्लूकोजेल एक तरह का एक जेल टाइप का होता है, ग्लूकोज़ लिक्विड, वो चीज़ देते हैं उनको। अगर बहुत औक़ात उनकी ग्लूकोज़ बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ग्लूकागॉन एक इंजेक्शन है, जो कि मसल में दिया जाता है ब्लड ग्लूकोज़ को ऊपर करने के लिए। इसी तरह अगर किसी की ब्लड ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा है, तो वो सिंपल ब्लड ग्लूकोज़, सिंपल हाइपरग्लाइसीमिया जिसे हम कहते हैं कि ब्लड ग्लूकोज़ की मिकदार जो है, वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गई है। या कभी-कभार कंडीशन होती है जो कि काफ़ी सीरियस होती है, जिसको हम डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस कहते हैं। डायबिटीज़ का मतलब ब्लड ग्लूकोज़ है, कीटोएसिडोसिस जो आपकी फैट प्रोडक्ट्स हैं, वो कभी-कभार ज़्यादा हो जाती हैं और ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। इसके अंदर हमें इंसुलिन की ड्रिप लगानी पड़ती है, क्लोज़ मॉनिटर करना पड़ता है। तो मेरी सिर्फ़ लोगों से रिक्वेस्ट यही कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं और अपनी ग्लूकोज़ मॉनिटर कर रहे हैं, तो अपनी ग्लूकोज़ मॉनिटर प्रॉपर तरीके से करें, अपने जो उनके फ़ॉलो-अप हैं, वो फ़ॉलो-अप करें और जो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट उनको एडवाइस देते हैं, उसको वो उस चीज़ के लिहाज से उनकी गाइडेंस को फ़ॉलो किया करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर हबीब हैदर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएँगे। हमारे साथ लाइव जो है ट्रांसमिशन के अंदर ज़रीना यास्मीन साहिबा मौजूद हैं, उसके बाद नाइला इकबाल जो हैं वो भी गुड इवनिंग कह रहे हैं आप लोगों को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर इसका जो है आंसर हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा डॉक्टर हज़रात से ये सवाल है कि आजकल जैसा कि शुगर की बीमारी बहुत आम हो गई है, तो क्या ये जेनेटिक जो वालिदैन से बच्चों को ट्रांसफ़र होती है, तो क्या इसके चांसेस भी हैं या शुगर किसी सिम्टम के साथ खुद ही आती है ये? तो प्लीज़ मुझे इसका अगर हो सके तो जवाब दे दें। थैंक यू वेरी मच।
डॉक्टर राहत साहब, इस पे अगर आप कमेंट्स कर सकें, अगर आप इस क्वेश्चन पे प्लीज़। नहीं जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि डायबिटीज़ में जो है वो फैमिली हिस्ट्री वगैरह कितनी इम्पोर्टेंट है। तो वन ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर्स जो टाइप 2 डायबिटीज़ का है, वो फैमिली हिस्ट्री का होना है। यानी ये हमारी रेस से डिफरेंट बात है, यानी कि एक तो हम साउथ एशियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, जो पाकिस्तानी डिसेंट के लोग हैं, उनको वैसे ही डायबिटीज़ का ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके किसी पेरेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ है, एक पेरेंट को या दोनों पेरेंट्स को, या आपके सिबलिंग्स बहन-भाइयों में से किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है, या आपके बच्चों में से किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो आपका रिस्क ऑटोमैटिकली ज़्यादा हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ का। और वो रिस्क अनफॉर्चुनेटली इस रिस्क को हम रिवर्स नहीं कर सकते। यानी आप अपनी फैमिली हिस्ट्री या अपनी जो रेस है उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप इसलिए दूसरे जो आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना उनको कम कर सकते हैं। आप ये जो आपने शुरू में कमेंट किया कि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है। इस ज़ियाबितस के ज़्यादा कॉमन होने की वजह ये है कि हमारा लाइफ़स्टाइल जो है ना पिछले 2-3 डेकेड्स दहाइयों में इतना चेंज हो गया है कि आप देखेंगे अगर किसी आप टाउन में या सिटी में चले जाएँ, तो हर टाउन सेंटर, हर सिटी सेंटर में टेक अवेज़ की और फ़ास्ट फूड की चेन्स की लाइनें लगी हुई हैं। और पहले जो लोग इतना भागते-दौड़ते थे और काम करते थे, अब वो हर चीज़ आपके पास गाड़ी अवेलेबल है। लोग एक्सरसाइज़, एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं करते। तो लाइफ़स्टाइल जो है इसमें बहुत अहमियत का हामिल है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आपकी जीन्स आपको प्रीडिस्पोज़ करती हैं टाइप 2 डायबिटीज़ पे और आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा है और या मोटापा मोटापा जो है वो आप उसका शिकार हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसकी जिस तरह उन्होंने कहा कि हर जगह डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है, इसकी मेन वजह हमारा लाइफ़स्टाइल है। स्पेशली मैं अपनी अपनी रेस की बात करूँगा, साउथ एशियंस की, पाकिस्तानीज़ की। हम लोगों को तो लाइफ़स्टाइल पर्टिकुलरली इस बारे में बैड है। हम लोग पर्टिकुलरली अपनी डाइट का ख़्याल नहीं रखते, हम लोग पर्टिकुलरली एक्सरसाइज़ नहीं करते। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई होप आई एम एबल टू आंसर दिस। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर इसका Hello, आंसर my दें। name is Naila. The question I have for the doctor is, what are the symptoms of type 2 diabetes? Thank you very much. डॉक्टर सोबिया, इस पे अगर टाइप 2 डायबिटीज़ पे अगर अगर कमेंट्स कर दें आप। So again, a very good question. With type 2 diabetes, can be very silent as well. So one has to be very careful. जैसे डॉक्टर राहत ने बताया कि when especially our ethnicity, our culture, our eating habits, and most of the people are overweight, we are at the risk of developing diabetes. So अगर आपका diabetic risk बहुत ज़्यादा है, like if your both parents are diabetic and you're overweight, and you're not doing a lot of exercise, I will say at least get your diabetes test once a year, because you might not have any signs. But if you ask about signs, then tiredness, because you start losing sugar in urine, so you lose calories through that. That can make you tired. Some people feel that they are passing, they have to wake up a lot at night कि मैं 3-4 दफा जो है वो रात को उठ के बाथरूम जाती हूँ, because you cannot excrete sugar without water, so you pass urine with it. So बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा टॉयलेट जाना, टायर्डनेस फील करना, ये सब बहुत वेग सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए वंस अ ईयर टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, दैट मोस्टली डजंट गो अननोटिस्ड बिकॉज बॉडी में बिल्कुल इंसुलिन नहीं होती, सो दे कैन बी वेरी इल, दे कैन लूज अ लॉट ऑफ वेट, and they can present in an emergency कि बहुत ज़्यादा वेट लूज हो गया, बहुत स्वेटिंग हो गई, नोजिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, टमी पेन स्टार्ट हो गई, so they can be very sick. But type 2 can go unnoticed. That's the reason sometimes when we diagnose patients with type 2 diabetes, they might have diabetes for 10 years. तो उनकी eyes भी affect हो चुकी होती हैं, kidneys भी affect हो चुकी होती हैं, feet भी affect हो चुके होते हैं, and then they say, oh, मुझे तो बिल्कुल sugar नहीं थी डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया? But because they had sugar, it wasn't diagnosed. So I will say, at least if you have a very high risk, a family history, and your lifestyle is
high risk for diabetes, then at least once a year have it checked. डॉक्टर साहब वो फिर कमेंट्स कर रही हैं, व्हाट ट्रीटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर डायबिटीज पेशेंट होम सफर विच कोल्ड फीट एट नाइट? Yeah, so again, it's extension of what I was saying, that sometimes diabetes can be undiagnosed for years. So a person will say that, oh, mujhe to abhi diagnosed huई है, but my feet are hurting already. But it's not like that. Mostly they have diabetes for 10-15 years, और उससे nerves damage हो जाती हैं. So neuropathy कहते हैं, diabetic neuropathy. And it's a painful condition because their feet can hurt, they can have a burning sensation. It's a very, very uncomfortable condition. We don't have a treatment to completely reverse it, but we have treatment to control it. There are lots of medications available for neuropathic pain that they can have. Some topical capsicum cream है, लगा सकते हैं आप. Neuropathy की बहुत strong tablets आती हैं, and then you can build it up and you can keep your diabetes controlled. Because sometimes people can have different trajectory of disease. They can have very severe neuropathy and not very severe diabetes, but there's still a role that if your diabetes is controlled, then your neuropathy will be better. और मैं यही कहूँगी, जैसे डॉक्टर राहत अली ने भी जवाब दिया कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, but we can reverse it. We can reduce our risk by changing our lifestyle, by keeping a BMI in a normal range, and then avoiding developing diabetes. Because अब diabetes होगी तो फिर सारी complications start होती है ना. अगर आप पहले ही उसको avoid कर लें diabetes होना, तो then you won't have complications. So when patients come to my clinic and they ask me that, you used to say that, oh, you're going to find a cure for diabetes. Where is the cure? There is a cure. If you, when you are newly diagnosed type 2 diabetes, not type 1, but type 2 diabetic, if you lose 15% of your body weight, you can reverse it. You can reverse your diabetes. So ball is in their court. If they want to change it, they should change their lifestyle, reduce their weight, watch what they're eating, do lots of exercise. And if the genetic risk is so high that they will still get diabetes, I will say at least it will be well controlled. And there are lots of newer medications that you can take to keep it really controlled and keep your weight under control as well. But for neuropathy, there are medications. थैंक यू सो मच डॉक्टर सोविया. उम्मीद है कि नाइला अज़मत को जो है उनका आंसर मिल गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर उसका आंसर जाएंगे. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शगुफ्ता नाज है और डायबिटीज़ के हवाले से मैं ये क्वेश्चन चेक करना चाहती हूँ कि जब शुगर हो जाती है किसी इंसान को, तो हमने यही सुना हुआ है कि स्लोली ऑर्गन्स पे अटैक होता है. और इसमें मेरा मेन क्वेश्चन यही है कि जब हमें शुगर का अटैक हो जाता है तो उसके बाद हम अपने ऑर्गन्स को कैसे बचाएं. स्पेशली नज़र पे अटैक होता है, किडनीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम इनको किस तरह बचाएं. तो प्लीज़ इसका ज़रूर सोल्यूशन बताइएगा कि बहुत से लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि हमें एहतियाती सही तदाबीर जो हैं वो मालूम होनी चाहिए. थैंक यू सो मच. बड़ा सेंसिटिव और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर राहत अली, अगर आप इस पे जो है कमेंट कर दें प्लीज. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. वंस अगेन, डायबिटीज़ जब ट्रेडिशनली जिस तरह पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है, इसको उम्मुल अमराज कहते हैं. उम्मुल अमराज का मतलब है मरीज़ों की मर्ज़ की माँ, सब अमराज की माँ. यानी आप ये देख लें कि आप ऊपर सर से शुरू हो जाएं और पैरों तक जाते रहें, कोई ऑर्गन नहीं है जो डायबिटीज़ अफेक्ट नहीं करती. आई एम इम्प्रेस्ड कि आपके पास इतना नॉलेज है माशाल्लाह कि आइज़ को अफेक्ट करती है, किडनीज़ को अफेक्ट करती है, दिल को अफेक्ट करती है, पैरों को अफेक्ट करती है, स्ट्रोक्स कर सकती है, हमारी इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट कर सकती है. तो डायबिटीज़ जो है हर हमारे ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है. तो यूजुअली डायबिटीज़ की अफेक्ट जो है, जो कॉम्प्लिकेशंस, जो पेचीदगियाँ हैं, वो डायबिटीज़ के लेटर पार्ट में आना शुरू होती हैं. यानी जब आपको 5-10 साल से डायबिटीज़ हो जाती है. लेकिन याद रखें कि टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे कि डॉक्टर सोबिया ने कहा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ आपको हमेशा से शुरू में नहीं पता चलती, क्योंकि अक्सर लोगों को सिम्टम्स नहीं होते. तो काफ़ी लोगों को कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती हैं. जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनमें जो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू होती हैं तकरीबन 10-15 साल के बाद. तो आप इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?
तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना टाइप 1 के अंदर और टाइप 2 के अंदर, वो ये है कि आप अपनी ग्लूकोज को अंडर चेक रखें, ठीक है। आप अपने मुआलिज के साथ राब्ते में रहें, आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है या आप अगर आप जीपी के पास जाते हैं तो आप उनके साथ राब्ते में रहें। अपना ब्लड शुगर अगर आपको कहा गया है कि आप चेक करें तो आप रेगुलरली चेक करें, जैसे कि डॉक्टर हबीब ने भी कहा। और साल में एक बार जो है एटलीस्ट वो आप एक टेस्ट कराएं जो कि आपको 3-4 महीने की ब्लड शुगर बताता है, उसको हम HbA1c कहते हैं, वो आप ज़रूर करवाएं। तो ये तो है आपका ग्लूकोज। नंबर 2 लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल पे फोकस करें, अपनी डाइट का ख्याल करें, कैलोरीज की रिडक्शन करें। ये बहुत बड़ा टॉपिक है डाइट का, लेकिन मैं मुख्तसर ही बात करूंगा कि अपना कोशिश करके अवॉइड करें जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट है, उनको अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ जो है वो आप रिप्लेस करें। तीसरी बात, एक्सरसाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी हो सकती है आपकी ब्लड शुगर बेहतर होगी। नंबर 4, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें। अपने कोलेस्ट्रॉल को कोशिश करें, एक तो नंबर 1 चेक कराएं, नंबर 2 अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसकी दवाइयाँ आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल बड़ी एडवांस दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में। नंबर 5, आप रेगुलर मॉनिटरिंग कराएं इन चीज़ों की, अपने पैरों का ख्याल रखें। कहा जाता है कि अपने पैरों का उतना ही ख्याल रखें जितना आप अपने फेस का ख्याल रखते हैं, डेली उसको चेक करें। उसके बाद अपना जो है वो किडनीज का चेकअप कराएं, एटलीस्ट साल में एक बार आप ब्लड का टेस्ट कराएं और यूरिन का टेस्ट कराएं, ये चेक करने के लिए कि आपके किडनीज को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। उसके बाद आप अपनी जो है ना वो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। आई थिंक एक क्वेश्चनर ने ये बात पूछी थी कि स्ट्रेस का कितना रिलेशनशिप है। स्ट्रेस का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है डायबिटीज़ के साथ, उसको वर्स करती है डायबिटीज़ को जो स्ट्रेस है। और डायबिटीज़ स्ट्रेस कर भी सकती है क्योंकि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस है, ये आपके साथ है पूरी ज़िंदगी, आपको पता है कि ये मेरे से दूर नहीं जा सकती, तो आपके ऊपर वो आपके ज़हनी असाब पर सवार हो जाती है। और फिर दूसरी चीज़ें लाइफस्टाइल में कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल अगर आप स्मोक करते हैं तो अपनी स्मोकिंग को स्टॉप करें। अगर आपको हाई रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, यानी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ वगैरह की, तो आप अप्रोप्रिएट दवाइयाँ यूज़ करें, जिस तरह एस्पिरिन वगैरह है वो हम देते हैं कुछ केसेस में, सब में नहीं, सिर्फ कुछ केसेस में, रिस्क को कम करने की। तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ अवॉइड करने का तरीका मल्टी प्रोंग्ड है। आप अपने मुआलिज से राब्ते में रहें, दवाइयाँ अपनी इस्तेमाल करें, जो आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं उस पर जाएँ, जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको मॉडिफाई करें, उनको रिड्यूस करें, जो आपको बीमारियाँ हैं डायबिटीज़ और उसके अलावा उनको एज़ मच एज़ कंट्रोल में रखें एज़ पॉसिबल। तो इंशाल्लाह कॉम्प्लिकेशन रिस्क कैन बी सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड। इट इज़ पॉसिबल, इतनी दवाइयाँ मौजूद हैं कि ये सारा कुछ अचीव किया जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर राहत अली, कम्प्रीहेंसिव जो है आपने आंसर कर दिया। नाइला इकबाल जो है वो एक्सीलेंट इंसाइटफुल रिस्पॉन्स, थैंक यू नाइला, गुड क्वेश्चन एंड फीडबैक, थैंक यू कर रही हैं जनाब डॉक्टर सोबिया का, नाइला अजमत जो हैं। अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलेंगे सामीन और नाज़रीन, ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। आज डायबिटीज़ कैंपेन के हवाले से फर्दर जो है आपके कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहें इस टॉपिक से रेलेवेंट, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। Aghosh UK is working in collaboration with Al Hidmat Foundation Pakistan. Al Hidmat currently operates 18 Aghosh homes in Pakistan and has 5 more homes under construction, looking after more than 19,000 orphan children by providing them with food, shelter, education, health check and psychological support. I'm here today in Murree, Pakistan for orphans. These are the best orphans of talent. They've gone through a series of tests to see that they will be the leaders of tomorrow. I support this venture and I appeal to you, brothers and sisters, to do the same. Keep giving. This is the start, not the end. Help Aghosh UK to continue this journey successfully with Al Hidmat. Sponsor an orphan for just £30 per month. Send your donations, zakat and sadaqah to Aghosh by visiting our website www.aghosh.co, £30 per month, and help build the nation.
जी सामिन और नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज डायबिटीज़ के हवाले से और क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है, उस हवाले से बात करें। और ख़ास तौर पे बरतानिया, यूरोप के अंदर और ओवरऑल जो है हमारी पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी या एशियन बैकग्राउंड के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ से जो है अफ़ेक्ट है। ये एक मूज़ी बीमारी है, इससे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम जो है आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, अवेयरनेस पहुँचाई जाए और इस हवाले से इस इन्फॉर्मेशन को आप स्प्रेड करें, शेयर करें। ये आपके लिए भी बेहतर चीज़ है और आपके जानने, देखने, सुनने वाले और जितने भी आपके रिलेशन में लोग हैं, उन तक ज़रूर इस पैगाम को पहुँचाइए। ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपना कीमती वक़्त जो है, वैल्यूएबल जो टाइम है, वो हमारे लिए निकाला है और हमें मैक्सिमम जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। आगे हम प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं और फिर आंसर जानेंगे डॉक्टर साहब से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन ये है कि शुगर के लो या हाई होने से क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं कि जो हमें करनी चाहिए, और उसका हम लोगों को किस तरह मालूम होगा कि शुगर लो है या हाई है? प्लीज़ इस पर रोशनी डालिएगा। थैंक यू। जी, डॉक्टर हबीब हैदर, आप इस पे कमेंट्स कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये उसी क्वेश्चन से मिलता-जुलता है जो कि एक साहब ने पहले भी पूछा था कि क्या अलामतें होती हैं हाई और लो ब्लड ग्लूकोज़ की। तो उसमें जो है वही चीज़ है मेन कि वो इतनी याद रखें अपनी कि कैसे मॉनिटर करना है ब्लड ग्लूकोज़ को, और उसके लिहाज से उनके पास कोई चीज़ होनी चाहिए कि अगर ब्लड ग्लूकोज़ उनकी कम है तो वो उस वक़्त वो खा लें। या अगर बहुत ज़्यादा है तो अपनी जो उनका टेस्ट है रेगुलर वो होना चाहिए, जिसमें जो अभी डॉक्टर राहत ने बताया एक टेस्ट होता है HbA1c, जो कि उनको आइडिया दे देता है कि उनका ग्लूकोज़ मॉनिटर कितना है लास्ट फ्यू वीक्स के अंदर, 4 टू 6 वीक के अंदर। और उसके बाद जो है वो अपनी जो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से लें, अपनी टैबलेट्स पूरी तरीके से लें, और मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ वो आज की टॉक की मेन चीज़ यही है कि एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज़ और डाइट आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स। वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी मेडिसिन के साथ, आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर हबीब हैदर। फर्दर जो है शगुफ्ता नाज साहिबा थैंक यू कर रही हैं डॉक्टर राहत अली का, और वो हमसे किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कोशिश करते हैं कि वो रिकनेक्ट हो जाएँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर आंसर अस्सलाम जान वालेकुम, आई एम इनहा इलाही। मेरा सवाल डॉक्टर हबीब हैदर साहब से है कि अमूमन कहा जाता है कि मोटापे की वजह से भी शुगर हो जाती है। अगर हो जाती है तो इस मोटापे को किस तरह कम किया जा सकता है? शुक्रिया। जी, डॉक्टर हबीब हैदर साहब, मोटापे को कैसे कम किया जा सकता है? ये वैसे बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। मेरे ख़्याल है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि डायबिटीज़ का जो रीज़न होता है, जो कि डॉक्टर सूबिया ने भी बताया कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो आमतौर पे लेटर पार्ट ऑफ एज के अंदर होती है, और उसमें जो है ओबेसिटी, जो मोटापा जिसे हमें कहते हैं, वो मेजर फैक्टर अदा करता है। तो जहाँ तक मोटापे को कम करने की बात है, मेरे ख़्याल है सबसे मेन चीज़ है उसमें डाइट और एक्सरसाइज़ है। कि पहले ये कि आप कोशिश करें कि आप अपनी डाइट नॉर्मल रखें। डाइट में आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स लें, ठीक है? और एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। अगर उसके बाद किसी को जो है वो फिर भी उससे फ़ायदा नहीं होता, तो जिसको हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हाइट और वेट का है, अगर उससे आपका बहुत ज़्यादा जो है BMI बढ़ गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यूके के अंदर डिफरेंट ओबेसिटी प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर आपका जीपी आपको एडवाइस करता है कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। लेकिन मेन चीज़ जो है उसमें डाइट और एक्सरसाइज़ का ही रोल है। अगर नहीं हो पाता, तो फिर वो जिसको आप कहते हैं कि जो गैस्ट्रोप्लास्टी और डिफरेंट सर्जरीज़ हैं, वो हो सकती हैं। या फिर कुछ जो है मेडिसिन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि हालाँकि जो है सबको पता है कि मोटापे से सिर्फ़ डायबिटीज़ ही नहीं, स्ट्रोक होने का रिस्क होता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन आप कोई दवा लेने से पहले या कोई भी हर्बल मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से रजू करें, और डाइट और एक्सरसाइज़ करके मॉनिटर करें अपनी चीज़ों को। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मोटापा अगर किसी का है तो फ़ौरन ही वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आप अपना टारगेट बनाएँ, छोटे टारगेट बनाएँ कि आपने जो है, जैसे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम म्यान रवी के साथ चीज़ें करें। हम जानते हैं कि ये एक तरह से चीज़ डिटॉक्सिफ़ाई भी करता है हमारी बॉडी को। तो हम ये चीज़ भी कर सकते हैं कि हम अपने आप से थोड़ी डाइट, जिसे कहते हैं कि आप अपने खाने से या पेट भरने से थोड़ा कम खाएँ। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कौल है कि म्यान रवी इस्तेमाल करो, कम खाओ, अब पेट भरने से पहले अपना खाने को ख़त्म कर दो।
तो मेरे ख्याल है डाइट और एक्सरसाइज कोशिश करें, नहीं होता तो फिर अपने जीपी से कांटेक्ट करें या डॉक्टर से कि कोई सर्जरी या किसी ऑप्शन के लिए। लेकिन प्लीज़ कोई भी ऑन द लाइन मेडिसिन या कोई हर्बल मेडिसिन नहीं यूज़ करें बगैर अपने डॉक्टर की एडवाइस के। जीपी से जो है ज़रूर आप जो है वो कंसर्न कर लें। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, बड़ा ही अच्छी सजेशन दी है कि अफ्तारी को जो है वो वलीमा समझ के ना खाएँ, थोड़ा खाएँ ज़रा। डिटॉक्सिनेशन जो है इसी तरह होगी अगर आप खाने पे कंट्रोल करेंगे। शगुफ्ता नाज साहिबा जो है वेरी गुड आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन, थैंक यू अदा कर रही हैं डॉक्टर राहत अली आपका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर जो है उसका आंसर जानते हैं। Hello, Assalamu alaikum rahmatullah. My name is Sarfraz, and Dr. Saab, I would like to ask you a few questions with regards to foot diabetes. I have my parents have had ongoing episodes with diabetes, and I would like your advice to tell us what is foot diabetes and how one can diagnose it. जी डॉक्टर राहत अली, आप कमेंट्स कर सकते हैं इस पे प्लीज। Assalamu alaikum. Thank you for your question. It's an excellent question. I think it's a very common problem, the diabetes foot. So there are a few types of diabetes foot problems. Number one, as Dr. Sobia has commented on, is called as neuropathy. Neuropathy means damage of the nerves in the feet, which leads to problems with the sensations. Sometimes you can't feel your feet, and sometimes you can feel more sensations, and sometimes it is painful. So that's one problem. The other problem that diabetes contributes to is the lack of blood supply to the feet, which is called as vascular disease. So vascular disease sometimes is also associated with neuropathy, and both of them can contribute to further feet problems. Now, the active foot disease means ulcers in the feet. For example, if you're putting a lot of pressure on your feet are prone to getting ulcers. And this generally happens in presence of neuropathy, which is the damage to the nerves, as well as the vascular disease, which is disease of the blood supply towards the feet. And further, if that is not controlled appropriately with appropriate medical attention, it can lead to further problems. For example, collection of pus, which is also called an abscess, or gangrene. Gangrene means blackening of the feet or blackening of the toes. And that can often lead to what we call as amputations of the toes, amputation of the feet, and amputation of the leg up till the knees. And this is a very common phenomena occurring in not only Caucasian population, but more often in our South Asian population, Pakistani population, and Kashmiri population. So how to counteract that? First of all, as I said before, try to control your diabetes and any associated problems that you have. For example, high cholesterol, get your healthy diet, try to do as much as exercise you can, and try to lose your weight. Try to stop smoking if you smoke. Try to stop drinking alcohol if you do. And look after your feet as you look after your face, as it is said. Because diabetes can affect feet in as I said, in a lot of ways. If you do develop a diabetes foot problem, then you must visit your GP or your diabetes specialist. There are also some experts called as podiatrists or chiropodists, which means foot specialists. Some of them are actually specialized in looking after diabetes feet. So you contact them, you get your feet assessed, and then you see a diabetes consultant who specializes in looking after foot disease, diabetes foot disease. We call it DFC or DFD. So they will assess you, they will give you antibiotics if there is an active infection. They will provide you the footwear that you need to offload the pressure on your feet. Try to not walk much on those feet that are ulcerated. And obviously keep on attending the follow-up appointments. And hopefully the diabetes foot disease will improve. And obviously try and prevent these problems in the future if they have happened once. If they have happened once, you are more likely to have more problems of your feet again. I hope this answers your question.
थैंक यू सो मच डॉक्टर राहत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर हम आंसर जानेंगे। My name is Shireen Khan, and what is the difference between type 1 and type 2 diabetes? Thank you. जी डॉक्टर सोबिया, आप पहले भी कमेंट्स कर चुकी हैं गालबन जो है टाइप 1 टाइप 2 पे, इस पे थोड़ा सा अगर Yeah, type 1 and type 2 diabetes are totally different. The name is same, but the cause, the etiology is different, and it should be taken as two separate diseases. So with type 1 is not reversible because that means that your body is not producing insulin, right? So we have organ called pancreas in our abdomen that produces a hormone called insulin. We need that hormone to bring sugars down once we have eaten. So we eat sugar, sugar goes high in the blood, insulin is secreted at the same time, it brings it down and then stores it in the liver because we want it stored. We don't want it circulating in the blood because we don't want a very sticky, sugary blood because wherever it goes, it will damage that organ. So we want sugar to be stored in the organ, in the liver, not circulating. But if you don't have any insulin, then that's type 1 diabetes. That means the failure of the pancreas and your body is not producing insulin. Now, type 2 is opposite of that. You might have a lot of insulin because of your fat cells. When you have extra fat around you, your fat cells produce hormone that resist the action of insulin. So you have a lot of insulin, but your body is not letting it work. So when you eat, the sugars go up, insulin wants to work to bring it down, but your body is not letting it work because of the fat cells around it and other factors. Now, body then produce more insulin. So you actually have a lot of insulin in your body. And that's the reason type 2 patients are better managed with medications than insulin, because if you give them insulin, you might end up giving them a lot of insulin to fight that resistance. But we have so many new medications which you can use that lower the insulin resistance, control the sugars, and so many new drugs which can also control your weight. So we have like GLP-1 agonists, new tablets where you excrete sugar in your urine, you lose 300 to 400 calories a day, and you can lose up to 3-4 kilograms in weight. You got GLP-1 agonist where you take one injection either every day or once a week, where you can lose up to 7-8 kilograms as well, and you control your sugar. So totally different. In one, you have no insulin, and second, you have a lot of insulin, but the insulin that your body is producing is ineffective because of the resistance your body is showing. That's the reason in type 2, doctors keep saying that please exercise, please lose your weight, because when you exercise, your insulin resistance drops. So the insulin that your body is producing will become more effective. When you exercise, again, your insulin resistance will fall. So your own insulin will become more effective. Now, problem with South Asian community is that we are what they call thin fat people. So you can look very thin, but you have fat in a wrong place. You have fat around the pancreas in your tummy, which can predispose you to developing diabetes. Even if you look at it, especially from our Asian standards, you'll say, oh, this person doesn't look fat at all, but they have fat in the wrong place, which can cause type 2 diabetes. So when you exercise or when you lose weight, your insulin resistance will fall and you can reverse type 2 diabetes, but you can't reverse type 1 diabetes. You can have islet cell transplant, you can have pancreatic transplant, lots of newer treatments available now, but you can't reverse it by diet and exercise. The other thing I want to say that when you are newly diagnosed type 2 diabetic, whatever weight you're on, if you lose 15% of your body weight at that point, you can reverse it, because that's your body telling you that when you reach this weight, you will have enough resistance, insulin resistance, to develop type 2 diabetes. So if you come
down from that weight, 15% of your body weight, you can reverse it. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। इसी से रेलेवेंट कमेंट्स है, और अजवा डेट्स सेफ फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ एज दे आर रिलेटिवली लो और टू मीडियम और ग्लैमिक इंडेक्स लोड। Interesting. It's a very good कासिम ने question, and I will answer that. But I also want to mention that there are other types of diabetes as well. There's type 1, there's type 2, and then there's other types of diabetes as well that I don't want to mention to confuse people, but there are different kinds of diabetes. So it's important when you have family history, risk factors, and if you develop diabetes, to engage with diabetes specialists and have all the knowledge so you can empower yourself and you can treat it, because once you have diabetes, it's a lifestyle. It's not going away. So you have to live with it. So if you know all the ins and outs of the disease and treatment, then you can have that power. You can manage that, you can control that. So I will ask everyone today to, if they have this risk, then to please speak to doctors and have a tailor-made program for them, because it's one thing does not fit all. So you have to have very specific advice tailored to your lifestyle and your family history and all that. To answer that, you can have a date or an iftar or not. I have never stopped my patient from eating anything. It's a disease of a lifetime. You cannot tell people, please don't eat this or don't eat that. I think that would be criminal. They should enjoy their life. You eat everything, but you eat in a smaller portion. You watch what you're eating. In England, we do a program, educational program called Daphne. That's diet associated for normal eating. So you can eat whatever and then you modify your treatment around it, because people need to have that freedom to enjoy what they want to enjoy. So to answer your question, if you're having an ajwa date, you need to see what size of date is and how many carbs are in there, and then you reduce your carbs in other things. So maybe on that day you don't eat 2 plates of biryani, you can have 2 spoons of biryani and you can have a date. So you see how much carbs you are eating in a day, and if you can restrict your carbs to not more than 100 carbs in a day, then you are in a safer area. But I will never say to any diabetic patient, even type 1 or type 2, that you can't eat this. I can't say that. थैंक यू सो मच। आप जैसी वैसे अच्छी डॉक्टर सबको मिलनी चाहिए जो किसी चीज़ को खाने से नहीं रोकती। तो हमारे बुजुर्ग अफराद जो है शुगर के बावजूद जो है वो बहुत ज़्यादा टू मच शुगर जो है वो लेते हैं। वो कहते हैं कोई नहीं, ज़िंदगी जो अल्लाह ने दी है एक दिन जानी है। तो फिर भी जो है बैलेंस बैलेंस डाइट जो है वो ज़रूरी है। जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि आप पोर्शन जो है उसके मुताबिक जो है वो अगर सेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आई होप यू गेट योर आंसर मिस्टर कासिम महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर आंसर जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिया हसन है और मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि हमें शुगर कंट्रोल करने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, प्लीज़। शुक्रिया। जी डॉक्टर राहत अली, ये आप अगर इस पे कमेंट्स कर सकें। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ तो इसका ऑलरेडी जो है मैंने और डॉक्टर सोबिया ने पहले इसका आंसर दिया है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या एहतियाती तदाबीर। तो उसके ज़िमन में यही है कि हमने डाइट के बारे में गुफ्तगू की है और बेसिकली मेन चीज़ तो डाइट ही है। जो टाइप 2 की अगर हम बात करें, टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो उसमें बेसिकली तो डाइट ही है। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि कोई भी चीज़ की ममानियत नहीं है। जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। हर चीज़ में म्याना रवि ज़रूरी है। अगर आप खजूरें जो हैं वो पूरा बर्तन खाना शुरू कर देंगे तो दैट वोंट वर्क। आप 1 खजूर खा सकते हैं, 3 खा सकते हैं। अगर आप डेट्स के बाहर जाएँ तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको कोशिश करें कि कम मिकदार में इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा मिकदार में ना इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन को टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो हमारे ज़्यादातर रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हवाले से ही हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है वो वी डू एडवाइस कार्ब रिस्ट्रिक्शन। हम कहते हैं कि आप जो है वो जो भी चीज़ आपको जो चीज़ पसंद है वो आप एक मुनासिब मिकदार में यूज़ करें।
आपने देखा होगा कि बरतानिया में जो ज़्यादातर किताबें मिलती हैं डाइट के हवाले से, वो सारी की सारी वो अंग्रेज़ों की डाइट के हिसाब से हैं। यानी वो सुबह सीरियल होता है, फिर पास्ता होता है, जैकेट पोटैटो होता है और उस मतलब फिश एंड चिप्स हैं, उसमें बहुत सारी उसकी बातें लिखी होती हैं। लेकिन आप ये नहीं लिखा होता कि इतनी बड़ी चपाती होगी तो उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, अगर इतनी बड़ी रोटी होगी तो उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि मैं सुबह को 3 पराठे खा लूँ और दोपहर को 2 रोटियाँ 3 खा लूँ और शाम को जो है वो 2-3 रोटियाँ और खा लूँ, या फिर रोज़ों में मैंने 3 पराठे सुबह खाने हैं 4 अंडों के साथ और एक साथ पॉट मैंने दही का खाना है और रात को मैंने पकौड़े, समोसे और जो चीज़ मिल जाए मुझे मैंने वो छोड़नी नहीं है, तो दैट वोंट वर्क। तो कहते हैं कि एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ फाइन। हर चीज़ को आप मुनासिब मिकदार में एहतियात से इस्तेमाल करें और अगर आप क्वालिटी ऑफ फूड भी इम्प्रूव कर लें ना, जिस तरह अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स ही लेनी है, तो आप जो है वो रोटी की बजाय आपको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट थोड़ा-सा ले लें। रोटी मैं मना नहीं करता, थोड़ी मिकदार में रोटी लें और एक ही दिन रोटी और कोशिश करें बिरयानी इकट्ठी ना खाएँ। जिस दिन आपने रोटी खानी है, उस दिन बिरयानी खा लें और जिस दिन बिरयानी खानी है, उस दिन रोटी ना खाएँ। तो इस किस्म की एहतियात है। दूसरी, हमने एक्सरसाइज़ की ऑलरेडी बात की है और हमने मॉनिटरिंग की रेगुलर बात की है, अपने जीपी के पास बार-बार जाना, ब्लड टेस्ट कराना और अपनी डिफरेंट चीज़ों को मॉनिटर करना, आइज़ को, अपने पैरों को, अपने गुर्दों को। तो एंगेजमेंट जो है वो पेशेंट्स की बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखें कि जीपी तो आपको कॉन्टैक्ट करेगा कि आपकी एनुअल अपॉइंटमेंट है, आप हमारे साथ आके जो है ना वो चेकअप वगैरह करा लें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डायबिटीज़ आपकी है। डायबिटीज़ जीपी की नहीं है, डायबिटीज़ किसी डॉक्टर की नहीं है। वो आपको एडवाइस तो दे देगा, बहुत अच्छी भी एडवाइस दे देगा। लेकिन आप जब तक उस डायबिटीज़ को एडवाइस को फ़ॉलो नहीं करेंगे, उसको अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर मर्ज नहीं करेंगे, तो डिज़ायर्ड आउटकम आपको वो नताइज हासिल नहीं होंगे। तो होपफुली जो एहतियातें मैंने डिस्क्राइब की हैं और डॉक्टर सोबिया ने उससे पहले डिस्क्राइब की हैं, इंशाल्लाह ताला आप अपनी लाइफ़स्टाइल में उनको मर्ज करने की कोशिश करेंगे और अपने नताइज जो आपको मतलूब हैं वो आप उस पर पहुँच पाएँगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहत अली। आपने जो है तफ़सीलन इसका आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और फिर डॉक्टर सोबिया से इसका आंसर। Assalamu alaikum. My name is Ali. This goes out to the doctors out there. This is related to the diabetes. Diabetes is a big problem we're having in the UK. My dad's got diabetes, my uncle has it as well, and quite a lot of my family members. So my point would be, in relation to this sugar and the problems we have in our community, how can we try to prevent this from happening? And it's an ongoing problem. And what are the signs? We need to find out the signs in relation to maybe early signs of getting diabetes. Is there any way which we can possibly know then finding out at a later stage? We want to try to stop it before it gets worse. This is my question. Thank you. डॉक्टर सोबिया, आप अगर इस पे कमेंट्स कर सकें प्लीज। Yeah, I agree. It's a very big problem. 24, I would say 9% of the world population has diabetes now. Muslim, 9% of Muslim diabetic population we have in the world at the moment. So it is a big problem. It's a very big problem. And the main problem is our lifestyle. Non-sitting hours. If we check in 24 hours, how many hours we don't sit or lie down, there are very few actually. We do most of the tasks sitting down or lying down. So very static lifestyle. So we have to reduce our non-sitting hours, walking, healthy exercise. When you are, don't take escalators, lift, use stairs whenever you can. If it's a small, short distance, instead of taking an Uber or cab, try to walk. So these are simple things that you can do to avoid. If you have a very strong family history, as I said before as well, that at least have once a year test, because HbA1c is a test where you can check what your average sugars have been in last 3 months, and that can give you some indicator of which way your sugars are going, and it can tell you if you're pre-diabetic. So and I have a experience of seeing patients who were diagnosed with pre-diabetes. So they're not diabetic, but they're
getting very close to the level where they can be diabetic, so they're pre-diabetic. And when they were diagnosed with that, they just changed their lifestyle. They had a scare that, oh my God, I'm going to get diabetes now. So they changed it. They lost weight. They started exercising. They started eating healthily. They stopped smoking. So things like that. So I think knowing your risk, trying what you can reverse. We can't reverse our genes, we can't reverse our family history, but we can we can keep our BMI under control. We can avoid fat around the abdomen. We can have a healthier diet and exercise and all these things. Getting developing a habit of talking to professionals, or doing your own research about what the healthier diet options are, what the carbs are, how low carbs, what low carb options are available, and just knowing about it and then looking for the answers will help. थैंक यू सो मच डॉक्टर सूबिया। लास्ट हम क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद जो है इसको क्लोज करेंगे आज के इस प्रोग्राम को। डॉक्टर राहत अली, ये बताइएगा कि क्या ये हमारे इम्यून सिस्टम पर जो है किस तरह अफेक्ट करती है, और फिर जिस तरह घरेलू टोटके चलते रहते हैं कि जी करेले खा लें, कड़वी चीज़ें खा लें तो इससे अफाका हो जाता है, तो इसकी क्या यानी जस्टिफिकेशन है? इस पर थोड़ा सा कमेंट्स कर दें। सबसे पहले तो इम्यून सिस्टम की आपने बात की। जो डायबिटीज़ है, चाहे आपकी टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, वो आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा-सा अल्टर करती है। यानी आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज़ हो, ख़ास तौर पे जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, उनके ज़ख्म ठीक नहीं होते। पैरों में ज़ख्म बन जाते हैं या कहीं ज़ख्म बन जाते हैं, तो उनके ज़ख्म देर से ठीक होते हैं। तो इम्यून सिस्टम डेफ़िनेटली वीक हो जाता है, तो इसका डेफ़िनेटली लिंक है। दूसरा लिंक इम्यून सिस्टम के साथ ये है कि जो इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है, जिसको हम क़ुव्वत मुदाफ़अत का गलत इस्तेमाल हमारी जो बॉडी करती है, उसकी वजह से एक्चुअली टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। यानी कि जब टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, पैंक्रियाज़ जब फ़ेल होता है, लबलबा जब फ़ेल होता है, इंसुलिन नहीं बनाता, उसकी वजह यही होती है कि हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं, वो उनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। वो एंटीबॉडीज़ समझती हैं कि जो पैंक्रियाज़, ये जो लबलबा है, ये जो है ना, ये एक फ़ॉरेन चीज़ है हमारी बॉडी में। तो उसमें से जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है एंटीबॉडीज़। अब ये होता क्यों है, हमें इस बात का नहीं पता, लेकिन कुछ जो है ना, वो साइंसदानों ने कुछ मैकेनिज़म्स प्रपोज़ किए हुए हैं। तो ये ऑटो इम्यूनिटी जो है, जो या क़ुव्वत मुदाफ़अत का गलत इस्तेमाल हमारी बॉडी जो करती है, क्यों करती है हमें पता नहीं है, उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। दूसरा, मैंने कहा कि क़ुव्वत मुदाफ़अत की थोड़ी-सी कमी ज़रूर होती है, चूँकि जिसकी खुली मिसाल ये है कि आपके ज़ख्म ठीक नहीं होते। तीसरी बात है टोटके। देखें, टोटके जो है वो कुछ टोटके तो हैं मिथ्स, बिल्कुल मिथ्स हैं, और कुछ टोटकों में थोड़ी बहुत शायद वो हो हकीकत हो। जिस तरह कहा जाता है कि करेले जो है वो डायबिटीज़ का इलाज है। अब करेले एक्चुअली एज़ सच तो डायबिटीज़ का इलाज नहीं है, लेकिन करेले एक बहुत अच्छी सब्ज़ी है, उससे शुगर इम्प्रूव ज़रूर होती है। उसके अंदर चीनी नहीं है, किसी किस्म की भी चीनी नहीं है। आप देखें करेले जो हैं, वो बल्कि थोड़े कड़वे होते हैं। अब लोग समझते हैं कि वो कड़वाहट की वजह से डायबिटीज़ आपकी ठीक हो रही है, क्योंकि ये चीनी का उलट है, मीठे का उलट है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी सब्ज़ी है। जो कड़वाहट है ना, अब कुछ लोग जो करेलों का शरबत पीते हैं कड़वा। अब आप देखें कि एक बंदा रोज़ाना करेले का शरबत पिएगा, अब वो जूस तो नहीं पिएगा, अब वो साथ उसके कोई फ़िज़ी ड्रिंक्स या कोक वगैरह तो नहीं पिएगा ना। तो आप उसको ये समझ लें कि उसमें कोई एज़ सच क्योर नहीं है, लेकिन चूँकि वो अच्छी चीज़ है, करेला एक सब्ज़ी अच्छी चीज़ है, और सारी सब्ज़ियाँ अच्छी हैं। जो ख़ास तौर पे जो ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं, वो सारी की सारी अच्छी हैं, सिवाय कुछ सब्जियों को छोड़ के, आलू छोड़ दें या इस तरह की 1-2 चीज़ें वो कम खाएँ, बाकी सब्जियाँ तो बहुत अच्छी चीज़ हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स अ मिथ, आई थिंक इसमें कुछ हकीकत है, और वो हकीकत इसी लिहाज से है कि सब्जियाँ सारी अच्छी हैं, फल सारे अच्छे हैं, ख़ास तौर पे वो जिनमें चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि कुछ मिथ्स में थोड़ी बहुत हकीकत है, लेकिन ये कहना कि मैं इससे डायबिटीज़ को ख़त्म कर दूँगा, तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है। आपको डायबिटीज़ की जो ट्रीटमेंट है वो मल्टी प्रोंग्ड होती है, यानी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं, डाइट, एक्सरसाइज़, हर चीज़ इन्वॉल्व करनी पड़ती है। दूसरा, लास्टली बिफोर आई गो, मैं आपको ये मशवरा ज़रूर दूँगा कि काइंडली
कोशिश करके किसी हकीम के पास ना जाएं डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, किसी हकीम के पास ना जाएं। आप यकीन माने, मेरे पास पाकिस्तान में भी और दूसरे मुल्कों में भी मेडिसिन का तजुर्बा है। मैंने इतने ख़राब मरीज़ देखे हैं आए हुए, ख़ास तौर पे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, लोगों को कुछते पता नहीं क्या-क्या दिया जाता है। मैं ज़ाती तौर पे हकीमों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो पेशेंट्स जो हैं, जो मैंने ख़राब होते हुए अपनी आँखों से देखे हैं, या जो दोस्त बयान करते हैं कि फ़लाने के पैर ख़राब हो गए हैं, फ़लाने के गुर्दे ख़राब हो गए हैं, जिगर ख़राब हो गया, तो ये मेरे आँखों देखी बात है। तो प्लीज़ खुदारा इस बात पे एहतियात करें, हकीमों के पास ना जाएँ। आजकल तो इतनी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे डॉक्टर सोबिया ने बात की, इतने ट्रायल्स हो चुके हैं। अब न्यूकासल के प्रोफ़ेसर हैं रॉय टेलर, उन्होंने इतनी रिसर्च की हुई है इस वेट लॉस के ऊपर, 15% वेट लॉस करके 70% लोगों का डायबिटीज़ जो है वो ख़त्म, रिमिशन हो जाती है इसमें। तो ये इससे अगर आपकी 70% लोगों की न्यूली डायग्नोस्ड टाइप 2 डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए, इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? और वो कोई जानलेवा वो नहीं है ट्रीटमेंट्स, वो ट्रीटमेंट्स वही हैं जो कि होने चाहिए। और लास्टली जो रमज़ान है, उसको कोशिश करें, अगर आपको डायबिटीज़ है, कोशिश करें रोज़ों को यूटिलाइज़ करें अपने इस एम को अचीव करने के लिए। रोज़े जो हैं रमज़ान, इट्स अ बेस्ट मंथ टू लूज़ वेट। आप देखें बॉडी कितना सेल्फ डिसिप्लिन आपके ऊपर कर लेती है। आज आप यकीन माने, आज मैं सहरी के लिए नहीं उठ सका, लेकिन मैं चल रहा हूँ आज सारा दिन। और इस तरह के कई सारे लोग हैं जो तकरीबन 20-20 घंटे बगैर सहरी करे चलते हैं, और हमारा जिस्म इस बात को एक्सेप्ट करता है, नॉर्मल फील होता है। सारा दिन काम भी किया है और बाकी काम भी किए हैं, कुछ फील नहीं हुआ। इसी तरह ये इंसान का सेल्फ डिसिप्लिन है, इस सेल्फ डिसिप्लिन को यूटिलाइज़ करें। ख़ास तौर पे अपने सहरी और इफ्तारी के औकात में ज़्यादा खाने की बजाय, या गलत चीज़ें खाने की बजाय हेल्दी चीज़ें खाएँ, पानी ज़्यादा पिएँ, जूस कम पिएँ, और इस मंथ में कोशिश करें वेट लॉस करें। और यही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो एडवाइस भी है। उस ज़माने में तो इतनी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी, खजूर से और पानी से रोज़ा खोल लेते थे, तो वो लोग हेल्दी भी थे। अरसा दराज तक डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसकी वजह यही है कि वो लोग क्या कहते हैं कि जीने के लिए खाते थे, खाने के लिए नहीं जीते थे। तो ये थैंक यू सो मच डॉक्टर राहत अली, डॉक्टर हबीब हैदर, डॉक्टर सोबिया अरशद, आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जितने भी अहबाब ने हमारे साथ जो है इस नशिस्त को जॉइन किया, आबद हुसैन सियालवी साहब, नबीला भट्ट साहिबा, हाजरा खान, हसन रज़ा, उसके बाद जो है नाइला अज़मत साहिबा, शेरी खान, शगुफ्ता नाज़, और हिना इलाही, रबिया मीर साहिबा, सरफराज मीर साहब, और अली अकबर और नाज़िया हसन साहिबा, तमाम लोगों के शुक्रगुज़ार हैं, और कासिम महमूद साहब के। और इस मैसेज को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है 24 अप्रैल का जो अनाउंसमेंट किया है किडनी डिजीज़ के हवाले से, जो है रेनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हवाले से, हम एक नई नशिस्त और न्यूली जो है उससे उस शोबे से रेलिवेंट जो प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन रखने वाले लोग होंगे, उनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक नए प्रोग्राम, नए अज़म के साथ जो है फिर आपसे मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।